one of the trickiest chapters you'll get, but one of the most interesting ones also. You get multiple scenarios. It runs on only one formula. Speed is equal to distance upon time. There's no other formula, right? And there are two branches of solving. Either you solve by using the formula of speed, distance, time, wherein you spot that either speed is same, distance is same, or time is same, and one of those is constant, and the other two have a ratio between them. The second way of solving is relative speed, where two bodies are moving with respect to another. You unify their speeds by adding or subtracting, and then use the single most formula, speed is equal to distance upon time. These are the only two ways you largely solve, only two formulas or approaches through which you solve TSD. But still, TSD ends up being a very complex, at times perceived as a complex chapter. That is because there's so many different scenarios. So today's class is specifically dedicated to different types of scenarios that time-space distance questions can have. We will discuss each of these types one by one, and that is how we will bucket what types of questions are there. And then, of course, there are miscellaneous scenarios that come in. Some of them we discussed in last 5 questions that we did in the last class, and some more will come the more you practice going ahead. Okay? Okay now. So, straight line motion. Straight line motion. Alright, this is our first scenario. So, straight line motion में क्या होता है? कल हमने देखा था राज सिमरन वाला example. You remember that? We saw कि there was this guy Raj जो अपनी गाड़ी लेके सिमरन को पकड़ने आ रहा था. This is our Simran, and यहाँ पे थे सिमरन के बाबूजी जो उसको रोकने आ रहे थे. Right? So Simran started running towards Raj. Why? In a hope to meet early. In a hope to meet early. और अपने बाबूजी से वो दूर दौड़ने लगी. Why? So that her बाबूजी shouldn't be able to catch her, and she meets Raj by that time, और फिर वो गाड़ी से भागते हैं. Right? So what did we say basically is कि because of Simran's motion, पहले Simran was standing straight, but because of her motion towards Raj, they are going to meet early. Time has decreased. Why? Because the speed has increased. So here the speed is collectively addition. Right? Versus in this scenario, when the babuji is running towards Simran and Simran is running away, पहले Simran was stationary, so babuji could catch her very quickly. But because Simran is running away, Babu is going to take more time. Why? Because now the speed has reduced. Right? So these were the scenarios. So accordingly, in straight line motion, we have two types of directions. One is when the two bodies are moving in opposite direction, towards each other or away from each other. Opposite direction. And another scenario when the motion is happening in the same direction, like Babuji and Simran were running in the same direction. So what did we understand by it? मैंने ना इसको ऐसे बड़ा ड्रॉ करना चाहिए तो फिर दोनों में आ जाता वो, है ना? So let me draw it. Let me take that liberty, है ना? कि there is this, right, straight line motion, and then there is this Simran. They are running towards each other with the speeds S1 and S2. So in opposite direction when they are running, this is opposite, right? Opposite can be like this also, separation ka time ya milne ka time. So here the speeds is S1 plus S2. What is the relative speed? The relative speed is addition. And when the motion is happening in the same direction, Babuji and Simran are running in the same direction. And so we say the speeds subtract. Do we have clarity on this? Can we move ahead? Yeah. How do we find relative speed? Relative speed is addition, and in this case, it is subtraction. Okay. So now that we are aware about it, let us solve a few questions. This is the opposite direction wala question. A and B start from opposite ends of the road towards each other with 50 km per hour and 40 km per hour speeds. Right? Find the point of their meeting if the road is 18 किलोमीटर लिख देना चाहिए, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए बिकॉज स्पीड हमारी किलोमीटर पर आ रहा है, राइट? यूनिट सेम होनी चाहिए. तो 1800 अच्छा 1800 मीटर इज हाउ मेनी किलोमीटर? 1800 मीटर इज हाउ मेनी किलोमीटर? 1000, राइट? 1000 1.8. सो 1800 मीटर इज 1.8 किलोमीटर. तो ये हो गया हमारा कन्वर्ट. हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमेशा एक तो मेमोराइज कर लो कि ऑपोजिट डायरेक्शन इज एडिशन, सेम डायरेक्शन इज सबट्रैक्शन. बट बेटर वे बिकॉज सिनेरियोस इतने सारे हैं ना, बेटर वे रादर देन मेमोराइजिंग इज टू इमेजिन इट दिस वे कि अगर ये 40 किलोमीटर वाला स्टेबल होगा तो इसको इससे मिलने में टाइम लगेगा कुछ, बट इसके मोशन के कारण अभी वो जल्दी मिलेंगे ना, राइट? पहले इसको मिलने के लिए कुछ टाइम लगता, बट इसके मोशन के कारण नाउ दे वांट टू मीट अर्लियर. तो व्हेन द टाइम हैज रिड्यूस्ड वी विल से ओके, मतलब वो ज्यादा तेज डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट? वर्सेस अगर ये स्टेबल है और ये इसको कुछ टाइम लगता है इसको मिलने के लिए, बट ये सेम डायरेक्शन में दूर दूर भाग गया तो ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब स्पीड हैज रिड्यूस्ड. इस तरीके से इमेजिन करना है. तो हमें पता है यहाँ पे वो जल्दी मिलने वाले. तो व्हाट इज योर रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर, है ना? डिस्टेंस कितना है? 1.8 किलोमीटर. तो टाइम कितना है? टाइम इज हाउ मच?
डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। आर जाएंगे, ये डेसिमल में आ रहा है क्लियरली, तो अभी हमने इसको थोड़ा सा 60 कर लेते हैं ताकि मिनट्स में आ जाए। आर को मैंने 60 मिनट्स लिख दिया क्योंकि बहुत उसमें आ रहा था, राइट। ऐसा करने से भी क्या आता है, 5 जा, राइट, 18 5 जा, तो 6/5। तो अगेन इसको मुझे शायद सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, फिर सही से आंसर आएगा 72 सेकेंड्स। ठीक है, सो हाउ हाउ क्विकली विल दे मीट, दे विल मीट इन 72 सेकेंड्स। अब उन्होंने पूछा है कि फाइंड द मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, ओके। तो अगर ये 72 सेकेंड्स में मुलाकात हो रही है तो ये बंदा 72 सेकेंड्स में कितना आगे जाएगा, ये कर देती हूँ 50 किलोमीटर पर आवर है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डू रिमेंबर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं, मतलब किलोमीटर को इंटू 1000 करना पड़ेगा तो मीटर आएगा, और आर को इंटू 3600 करना पड़ेगा तो सेकेंड्स आएगा। तो मीटर पर सेकंड मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल स्पीड, स्पीड इंटू टाइम गिव्स यू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम गिव्स यू डिस्टेंस, ठीक है। तो 18 4 इट इज 20,000 मीटर, 1000 meter. Where are they meeting? They are meeting 1000 meter from here. Where are they meeting? They are meeting 1000 meter from here. मतलब 800 meter from the second person, right? So what is the meeting point? Meeting point is 1000 meter from A or 800 meter from B. Do you understand how we solved this? हमने कल भी ये already ले लिया था. We had already done this yesterday, है ना? इसलिए मैंने ये additional meter per second और kilometer और इस सब का angle डाला. I put that extra angle here. Why? Because we had already done this question in the previous class. But वो calculation अलग बात हो गई, concept अलग बात हो गई. I hope you understood the concept. The concept is we found the relative speed by adding the speeds because the motion was such. Distance time से हमने time निकाला and according to the time we are like okay. So इतने time में अगर उनकी मुलाकात हो रही है, then let me find out कि how much distance does each one of them travel in that time. So distance is speed into time. So speed was 50 km per hour and traveled for 72 seconds. It means 1000 meter travel. And the other traveled by 800 meters. So that is how they met. Fair? Understood? Chalo. Now let us do this question, which is same direction. Karo isko. Raju runs away from home when his mother asks him to complete his homework. Bada natkat hai. 15 minutes later, his mom sees him missing and runs behind to chase him. तो ये straight line है ना? राजू निकला और उसके 15 मिनट के बाद उसकी मम्मी को पता चला. So two people are moving with respect to another. राजू भाग रहा है, उसके पीछे उसकी मम्मी भाग रही है. So it is two people moving. When two people are moving, relative motion. अगर एक ही person move हो रहा है तो relative motion नहीं होता है. Two people are moving तो then it's relative motion, right? तो relative motion की बात आएगी. But कब आएगी? After 15 minutes में राजू निकलने के 15 मिनट के बाद. Because पहले तो 15 मिनट के लिए राजू खुद अकेला ही भाग रहा है. अभी राजू के साथ साथ उसकी मम्मी भी भाग रही है, right? So probably राजू is somewhere here and the mummy. हाँ, probably Raju somewhere is here and उसकी mummy is somewhere here, right? Raju is there, mummy is here. So because of that, what has happened is she is running behind it. Raju is also running and she is running behind it. If Raju's speed is 2 km per hour and mother's speed is 3 km per hour, obviously मम्मी तेज भाग रही है तो एक पॉइंट पे तो राजू को पकड़ लेगी ना. राजू पहले क्यों ना निकला हो, राजू पहले क्यों ना निकला हो, 15 मिनट्स पहले निकला हो, पहले क्यों ना निकला हो, मम्मी तो तेज है, मम्मी पकड़ लेगी. How much time does Raju has to hide before his mother chases him? How much time he has before he hides? Maximum time उसके पास कितना बचा है छुपने के लिए? तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें पता है कि यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, है ना? With what speed is mom chasing Raju? Speed with mom chasing Raju is the speed with which mom is chasing Raju is 3 minus 2, 1 km per hour. उसकी मम्मी राजू को 1 km per hour से चेस कर रही है. बिकॉज राजू 2 से आगे जा रहा है, मम्मी 3 से पीछे से आ रही है. 3 minus 2, 1 km per hour से मम्मी उसको चेस कर रही है. दैट इज फर्स्ट. स्पीड. व्हाट इज द डिस्टेंस? Distance is basically this much distance. How much is distance? This distance is a distance covered by Raju in 15 minutes. 15 minutes. So distance is speed into time. Speed कितनी थी राजू की? 2. Time कितना था? 15 minutes is 1/4 of an hour. 15 minutes मतलब 1/4 हो गया ना hour का. So this is 0.5 kilometer. Right? 1/2, 0.5 किलोमीटर. तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 0.5 किलोमीटर है ना? उन दोनों के बीच में स्टार्टिंग में डिस्टेंस कितना है? 0.5 किलोमीटर. मम्मी को 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ये डिस्टेंस ब्रिज करना है दोनों के बीच का.
तो टाइम कितना है? डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज 1/2. 1/2 इज हाउ मच? 1/2 ऑफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स. कितना टाइम है राजू के पास छिपने के लिए बिफोर इज मदर कैचेस हिम? 30 मिनट है. 30 मिनट होने से पहले पहले राजू छुप जाए तो उसकी मम्मी उसको पकड़ नहीं पाएगी, बिकॉज वो घूम जाएगा तो मम्मी देख नहीं पाएगी तेज दौड़ने से भी. So this is how you solve it. Speed, distance and time. Do you get this? समझा हमको? हम हमेशा डिस्टेंस क्या होता है? इनिशियल सेपरेशन होता है. जब ए और बी ने स्टार्ट किया था पिछले वाले क्वेश्चन में 1800 मीटर से, तो वो डिस्टेंस हो गया इनिशियल डिस्टेंस. अभी राजू और मम्मी के बीच का इनिशियल डिस्टेंस कितना है? 0.5 किलोमीटर. तो जितना भी इनिशियल डिस्टेंस है वो हमारा हो गया डिस्टेंस. ठीक है, स्पीड हमारी हो गई रिलेटिवली ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो टाइम निकल जाता है. राइट, चलो. सो अभी अभी हमने देख लिया स्ट्रेट लाइन मोशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन मोशन इन सेम डायरेक्शन. अब नेक्स्ट सिनेरियो आता है स्ट्रेट लाइन मोशन का ही, मल्टीपल मीट्स. मल्टीपल मीट्स मतलब क्या है? लेट्स से these are the two cars that are traveling on a straight line, right? ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है. ये स्ट्रेट लाइन से उन्होंने डिसाइड किया, वो आ रहे एक दूसरे से मिल रहे हैं. मिलने के बाद दे गो अपने अपने डायरेक्शन. एंड पॉइंट्स के पहुंचने के बाद वो फिर से वापस आते हैं. सेकेंड टाइम मिले, दूर हुए, देन फिर से आए, थर्ड टाइम मिले. इट्स लाइक दे आर टेकिंग अ वॉक टू एंड फ्रो. ये होता है ना, अगर तुम और तुम्हारी बहन, तुम और तुम्हारी मम्मी किसी दिन छत पे गए या नीचे गार्डन पे गए और दोनों वॉक कर रहे हो, होता है ना ऐसा, मिलोगे फिर जाओगे फिर उठाओगे आओगे मिलोगे, हैपेंस. दिस इज अ मल्टीपल मीटिंग सिनेरियो. अब तक एक बार मिल रहे थे, राइट? दीज टू ए एंड बी केम एंड मेट वंस. राजू और राजू की मम्मी भी, मम्मी ने किया थप्पा तो वो मिले एक ही बार, राइट? तो ऐसा नहीं, हमें करना है मल्टीपल मीटिंग्स का क्या सीन है. So let us see how to solve it. A and B start from opposite ends of the road towards each other. Yeah. A or B starts from opposite ends of the road towards each other with 50 km per hour and 40 km per hour speeds. Find the point of their fourth meeting if the road is 90 km long. ये road कितने 90 km long. ठीक है, तो you have to find the point of their fourth meeting. चौथी मीटिंग कहाँ पे होता है? अब तक तो हम फर्स्ट मीटिंग निकालने में वो हो गए थे. फर्स्ट मीटिंग तो हम इजीली निकाल पा रहे थे कि फर्स्ट मीटिंग कैसे हो रही थी. स्पीड होती है 90 km पर आवर, ऐड करके डिस्टेंस इज इक्वल टू 90. तो टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड. स्पीड, हाँ, डिस्टेंस बाय स्पीड विच इज इक्वल टू 1 आवर. तो ये 1 आवर में हम बोलते हो कि ए जो है वो 1 आवर में 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, बी जो है वो 1 आवर में 40 किलोमीटर ट्रैवल किया. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ मीटिंग कितनी है? 50 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए एंड 40 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट बी. ऐसे हम कैलकुलेट करते सीधा सीधा. बट अभी ऐसा नहीं बोला, अभी बोला है मल्टीपल मीटिंग्स. ऐसा नहीं बोला, अभी बोला है मल्टीपल मीटिंग्स. तो हाउ टू कंसिडर मल्टीपल मीटिंग्स? कीप दिस इन माइंड. हमारी रिलेटिव स्पीड में स्पीड तो 90 रहेगी बिकॉज दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड विल ऑलवेज बी 90. S1 प्लस S2, ये तो क्या. मेन पॉइंट होता है डिस्टेंस कैसे निकालना है, राइट? सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम is 90 kilometer when it is one meeting, but when it is 4 meetings, is the distance covered by them 90? No, it will be more. How to determine that distance? I will tell you. So पहली मीटिंग होती है, पहली मीटिंग happens जब वो दोनों आते हैं और मिले, ये होगी पहली मीटिंग, राइट? दूसरी मीटिंग इज so basically whatever distance is this D दोनों ने मिलकर D डिस्टेंस कवर किया और उनकी पहली मुलाकात हुई. अब जब सेकंड मीटिंग हो रही है तो क्या हो रहा है? ये दोनों जा रहे हैं एंड पॉइंट तक विच इज D अगेन, एंड फिर आके फिर से मिल रहे हैं तो विच इज D अगेन. तो फर्स्ट और सेकंड मीटिंग के बीच में D 2 बार कवर हुआ, मतलब 2 टाइम्स D डिस्टेंस कवर हुआ, राइट? थर्ड मीटिंग में भी सेम, वो जा रहे हैं दूर फिर से आ रहे हैं, तो एक बार जाने का और आने का ऐसा D प्लस D 2D डिस्टेंस हो रहा है, राइट? सो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हो रहा है? बेसिकली हाउ इज द डिस्टेंस गेटिंग कैलकुलेटेड कि फर्स्ट मीटिंग से जब से हुआ तब से फर्स्ट मीटिंग तक उन्होंने D डिस्टेंस कवर किया टुगेदर. फर्स्ट मीटिंग होने के बाद सेकंड मीटिंग तक उन्होंने 2D डिस्टेंस कवर किया. डू यू अंडरस्टैंड व्हाई? है ना? फिर सेकंड मीटिंग होने के बाद थर्ड मीटिंग तक उन्होंने फिर से 2 टाइम्स डिस्टेंस कवर किया. कैसे? लेट से ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, उनकी मुलाकात हुई, फिर ये वाला ऐसे जाके ऐसे आया और ये वाला ऐसे जाके ऐसे आया, तो दोनों ने देखो पहले D और फिर वापस आके D, तो ऐसा 2D डिस्टेंस टुगेदर कवर किया है ना? फिर थर्ड मीटिंग से फोर्थ मीटिंग तक भी उन्होंने 2D डिस्टेंस कवर किया, मतलब टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 7D, विच इज 7 into 90 इन दिस केस, विच इज, सो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? जब हमें एक मीटिंग निकालनी थी तो हमने डिस्टेंस की वैल्यू 90 ली थी, बट अभी हमें फोर्थ मीटिंग तक का निकालना है, तो डिस्टेंस विल टेक 630 किलोमीटर. इधर तक समझाएंगे तुमको? So basically what happens is, I'll explain again. If this is a road, if these are the two objects that are moving, right? But everything is white. Abhi you can see, I don't know if you can see. There are two objects that are moving, right? Let's say
this object and this object. Okay, they are separated by the distance d. You calculate in relative speed. What do? You don't take two speeds. You add or subtract their speeds and make it into one speed, right? So you basically say that the overall this system is traveling with what speed, right? So this system is traveling together with 90 km/h speed. The speed is sorted, right? Now you're like distance. How much distance did they cover? So distance is always together. How much distance covered, right? So initially, when from starting point the first meeting is happening, they're separated by the distance d. Together they met. So how much distance have they covered? This person and this person included. They have covered the total distance d. Do you understand till here? Yes. Now what happens is whenever they have met at this point, first meeting हो गया, first meeting के बाद second meeting के लिए they will go in opposite directions because see this is where they started from. They went and then they crossed their roads. Right. So from center when you go out again together you have covered the distance d. Right. पहले ऐसे था फिर ऐसे करके x plus y cover करके total d distance cover किया और फिर वापस मिलके वापस आए मिलने के लिए. So this is also by covering the distance d. So first meeting से separate होके जब वापस आए तो between first and second meeting they covered the distance 2d. Then again second meeting के बाद वो straight गए और वापस आए. फिर ऐसे straight गए और फिर से वापस आए. So every time between two meetings for the first meeting from end to center there is a distance d and overall 2d. So till fourth meeting they have covered a total 7d distance which is 630 km. Now they have covered the 630 km. The same question, okay? Now that they have covered the 630 km, now what happens is you know speed is 90 km/h. Distance covered is 630. So how much time did they require? How much time did they require? Distance upon time? 7 hours. How much time did they require? 7 hours. In 7 hours, then how do you calculate? In 7 hours, in this time, how much did A travel? A traveled by 50 km/h into 7, right? Which is 350 kilometers. How much did B travel? B traveled 40 km/h into 7 hours, which is 280 kilometers. This is how much each of them traveled. So now you have to find the point of their meet. Okay, how do you find the point of their meet? Here was A, here was B in the starting, and here was this 90 km between them. Now what happened is your A started from here. Okay, पहले cover किया 90 इधर तक आके, है ना? They individually they went, right? Then from here it went back 90 another to 180. Then again back to 270, right? 270 because 9 threes are. And then again it went back to cover 360 total because 94 are. But that didn't happen. 350 तक ही कर पाया. तो मतलब it stopped here. This distance was basically how far? This distance was basically 80 km far from this point. 10 km बच गया था क्योंकि वो 360 complete नहीं कर पाया. Versus if I talk about B, so this B guy started from here, it went straight, 90 cover किया, फिर वापस आया, another 90, 9 was 9 to 18, then another 9 is 27. अभी 280 कवर करना है, मतलब सिर्फ वो 10 किलोमीटर और कवर कर पाया, right? So again 10 km from here, 80 km from here. So fourth time when they met, A was in this direction and B was in this direction. But where was this meeting point? This meeting point was 10 kilometers away from A or 80 kilometers away from point B. So where did they meet for the fourth time? At this distance. Are we clear about this? Right? Speed, distance, time. That is it. Okay? Chalo. Okay. Now we have next. हमने opposite direction देख लिया, same direction देख लिया, multiple meetings देख लिया. अब multiple meeting में distance कैसे calculate करते हैं, imagine करते हैं, वो भी देख लिया. अब next thing that we have to do is circular motion. What happens in circular motion? Circular motion is when two bodies are moving in circles. So let's say this is a circular track. This is one starting point. I need some space. Let us say this is a circular track and this is a starting point. Okay. Now there are two people, there is A and there is B, who decide to move in opposite directions. They decide to move in opposite directions. So A starts running here and B starts running here. Right? Overall, in the system, two bodies are moving with respect to one another. When two bodies are moving with respect to one another, is it a relative speed? Yes. Will we add here or subtract here? How to determine? Consider that B was stationary. B अगर stationary था, तो A को उसको मिलने के लिए कुछ टाइम लगता, वो ऐसे गोल घूम के आता, A और B से मिलता, कुछ टाइम लगता, right? Some time, let's say 1 hour लगता. अब when the A start running, if B also starts running, will A be able to meet B earlier? Yes, right? अगर B एक जगह पे होता, but relative motion के कारण the time is reduced. Well, the distance is same. At the end, the together have to cover the entire circle. Same distance है, but अभी time कम लग रहा है, मतलब speed has increased. So again, S1 plus S2. Versus in this motion, same direction, let's say
A is also moving here and B is also moving here. In that case, if B was stationary, A would have taken, A running would have came and met B. Some time, let's say 1 hour. But because now B has also started running, A comes back and sees, अरे B कहाँ चला गया? So again, A has to chase B. So now A is going to require more time to chase B now, right? Because B is not the position he was supposed to be. So because of B's motion, because of this relative motion, the time, although the distance is same, the time has increased because the speed has decreased. So S1 minus S2. So circular motion में ये दो scenarios है, opposite direction में we say add and same direction में we say subtract. Circular motion में भी यही था. Do we have clarity on this? Yes. It's about how will the speed be of the system. Will you add or will you subtract? So now that you know about this, let us move ahead and start questions. It says circular motion in opposite direction. They say A and B are running on a circular track in opposite direction, starting from the same point. So let's say this is the point where A and B started from, right? They start at the same time, but opposite direction, right? So this runs here by 20 meter per second and this runs here by 30 meter per second. By how much time will they meet each other? Again, if the length of track is 2000. तो यहाँ पे speed क्या होगा? Again, S1 plus S2. Distance कितना है उनको एक दूसरे के बीच में? 2000 meter before they meet each other. तो time कितना लगेगा? 40 seconds. So after how long will they meet each other? After 40 seconds. समझ गया क्या? कैसे निकाला हमने? Yes? तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखना है. करो अभी ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. Very good. Give me answers, Vidhi. I want answer from you also. Very good. Same direction. Always whoever has more speed should follow. है ना? कोशिश ये करा करो. तो relative speed कितनी है अभी? 30 minus 20 is 10 meter per second. Distance of separation is 2000 meter. Because at the end they have to come and they have to meet each other, right? So this is 2000 meters. So time is distance by speed. Okay? So after every 200 seconds they will meet. ठीक है? So you have this. Now it is about multiple meetings, beta. Okay. अभी ना मुझे एक और चीज करवानी है इसमें before we move next. I want you to also find what is the point of their meeting. Point of meet कैसे निकालेंगे हम? Point of meet कैसे निकालेंगे? 200 seconds अगर वो दौड़ रहे हैं तो देखो ना A को देखो कितना दौड़ेगा वो. So in 200 seconds A will be like okay my speed into my time gives me 4000. B क्या बोलेगा? My speed into my time gives me 6000. मतलब basically your A will 2000 एक बार 2000 दो बार 2 rounds और उतने टाइम में तुम्हारा B is like 1000 2000 3000. So ये घूम चुका होगा 3 rounds. बट कॉन्सिक्वेंटली इसके 2 राउंड्स खत्म होते होते इसके 3 राउंड्स खत्म होके वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ देयर मीटिंग? द पॉइंट ऑफ देयर मीटिंग वाज द स्टार्टिंग पॉइंट इटसेल्फ. After 200 seconds, they both happened to meet at the starting point. That was their point of meeting. If I have to take this question, what is the point of meeting here? They are meeting after 40 seconds. So A with 20 meter per second into 40 seconds gives us 800 meter. And your B with 30 meter per second into 40 seconds gives you 1200 meter. Right? So talking about your A, it will have gone from here and moved somewhere which is 800 meters away. Right? And your B will have ran from here and then 1200 meters away. बराबर है ना? 2000 मीटर लेंथ है तो बराबर 1200 plus 800 2000 बन रहा है. So what is the point of meeting? Clockwise direction पे 1200, anti-clockwise direction पे 800. That is our point of meeting. So ऐसे you can find point of meeting. What do we do always for point of meeting? We take the speed distance time, we find the time, and whatever time we get, in that time we say A or B ने एक दूसरे ने कितना distance cover किया, and then that is how we found out कि how much distance this covered, how much distance this covered, and we find the common point where they met. ठीक है? That is our approach will always be. Now circular motion multiple meetings. We will do a multiple meeting scenario. ठीक है? We will do a multiple meeting scenario. What happens here? Here they're saying A and B run in on a circular track in opposite direction, starting from the same point. So they are basically starting from the same point.
Again, same. A is running with 20 meter per second that we just solved, and B is running with 30 meter per second. And the length of the track is also 2000 meter. Now you have to find the time of their fourth meeting. As usual, यहाँ पे speeds हम बोलेंगे 50 meter per second add होगा. अब distance कितना है वो calculate करना है ना? Multiple meeting की distance calculate करना पड़ेगा. तो इसमें imagine करो. Let's say they both start running. They meet each other somewhere. Distance D covered, length once covered. Now from here they start running in opposite direction and they come meet somewhere again. So again effectively distance D cover किया. Do you realize that on a circular path, if they start from here and meet here, then they again from first meeting to second meeting they go again they cover D. From this third meeting they again cover D. With every successful meeting they're covering 2000 meter together, right? So for the fourth meeting they will have covered 8000 meters. Unlike in straight line पे क्या हो रहा था, वो डिस्टेंस D कर रहे थे और D के बाद फिर D वापस जाके D वापस आना पड़ रहा था, 2D होते गया. बट सर्कुलर में तो D every meeting they are covering together as a system. They are covering distance D every time. 4 times 4 meetings में तो 8000. तो टाइम कितना हुआ? Distance by speed. Yes or no? 160 seconds. So after how much time will they meet in their fourth meeting? 160 seconds. Where will they meet? What will be the point of meeting? We'll be like, okay, A traveled with 20 meter per second for 160 seconds. Matlab A ended up traveling 3200 meters, while B traveled 30 meter per second, say, for 160. That is 4800 meters. So considering this point, if I actually take the journey, I realize A started from here, took one round, which was 2000, and then took another round, which was 1200 only. Right? Some 1200 distance from here to here. Right? Versus your B traveled from here. B was traveling in this direction. B did one round, 2000. B did second round, 4000. And then B came here and then did 800. For 4800. Right? So देखो बराबर उनका मिलन उसी पॉइंट पर. Fourth meeting का भी. Do we get this? Do we understand this? Give me a yes, give me a no. Yes? Very good. Chalo. Now we are doing again another scenario. It is not multiple meet scenario. It is a scenario where you started at different points. अब तक circular motion में क्या कर रहा था? We were making them start at the same point. Now they are not starting at the same point. They are starting at different points. So what happens here? We take a circle. We are like, okay, A and B run on a circular track in opposite direction, away from each other, with 20 meter and 30 meter speed, same. After how much time will they meet if their starting points are 500 meters apart on a 2000 meter track? So 2000 meter track में 5000 meters apart है, ये A है, ये B है, and they are running opposite to each other. ठीक है, opposite away from each other. Opposite direction could also mean this, but they are saying away from each other, right? So we know that is the direction. This is 20 meter per second and this is 30 meter per second. The distance between them is how much? 500 meter. Now, again, two bodies are moving with respect to one another. What we have to do is we have to find speed and distance and time. What is the speed? Speed will be again opposite direction, has to be 50 meter per second. This is not going to change. Now distance. How much distance will they have to cover to meet each other? What is the distance now? Is the distance entire 2000? No. Now the distance is not 2000. Now they have to meet somewhere here, beach mein. So together they are covering only this much path. Together as a system they are covering only 1500 meter because 2000 का total road है. 500 तो distance ही है उनके बीच का. Right? 500 तो उनके बीच का distance ही है. So 1500 meters. So if it is 1500 meter, the distance is 1500. So time is distance by. After how much time will they meet in this case? Just 30 seconds they will meet. Do we get this concept? Distance हमें calculate करना है total overall as a system. From starting point till the point they are meeting, how much distance they are covering. अभी सेम डायरेक्शन में रन करेंगे different points से. ठीक है, ये हो गया. Now do you know A and B circular track? These only speeds. How much time will they? In how much time will they meet if A starts from a point 500 meter ahead of B? 500 meter ahead of B. तो मतलब ahead मतलब ऐसी हुआ ना, B अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके आगे है A. And this is the distance between them. Right?
So speed here, of course, is 30 minus 20, 10 meter per second. Same direction, you subtract. What is the distance between them? Now, basically, these are the starting points. Starting points तक से उनको मिलने तक का distance कितना है? 500. They have to bridge this 500 का gap now, right? The distance here will be 500. The time is, they will need 50 seconds to meet each other. Are we clear on this now? How we calculate distance? Yeah, very good. Very good. So this is the whole crux of relative speed. First, we find speed basis the direction of motion. Then we find distance basis starting point and when they meet. How much distance is covered by them together? Right? तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करना है. एक को स्टेशनरी कर देना है. Let's say B को एक जगह पे खड़ा कर दो. देखो कितना टाइम लग रहा है, कितना डिस्टेंस है? 1500. ए को कवर. B को एक जगह खड़ा कर दो. जिसको भी ए आ गया ना, बी मिलने आ रहा है, तो 1500 मीटर. तो इस तरीके से 500 मीटर. तो इस तरीके से डिस्टेंस निकलता है विद टाइम. तो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है. नाउ another case of circular motion. Multiple people running in same direction. Now it's not just two people, it is three people. It is A, B and C. ठीक है? It is not two people, it is three people. मैंने स्पीड वगैरह सेम लेने की इसलिए कोशिश करी ताकि focus on learning the scenarios, not the calculation. Now they are saying that A, B, C run on a circular track in same direction. It is 10, 20 and 30 meter speeds. Now, this is interesting. This is a circular motion. A is also running, B is also running, C is also running. Same point say 10 meter per second, 20 meter per second, 30 meter per second. They're all running in the same direction. Okay, and the track is 6,000 meters. Now you have to find the point of their meeting. Now how do you solve? हमको तो रिलेटिव स्पीड सिखाया था when two bodies are in motion with respect to each other. थर्ड पर्सन आ गया तो हम क्या करेंगे? मैं बताती हूँ क्या करेंगे. You are going to find out two people at the same time. Two people at a time. You are not going to deal with all three together. Let us deal with A and B. And let's say A और B कितने टाइम में मिलते हैं. तो A और B का स्पीड कितना है? A और B together 30 मीटर पर सेकेंड. सेम डायरेक्शन है, सॉरी. हमने ये कर लिया क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन वाला कर लिया क्या? नहीं ना. हाँ, तो द थिंग इज नाउ दे आर मीटिंग. हम वी विल टेक टू पीपल एट अ टाइम. ठीक है. सो लेट्स से ए एंड बी का कितना है स्पीड? 10 मीटर पर सेकेंड. राइट. डिस्टेंस कितना है? 6000. राइट. टाइम कितना है? डिस्टेंस बाय 600 सेकेंड. ए और बी की मुलाकात कितने में हो रही है? 600 सेकेंड्स में. नाउ लेट अस टेक ए एंड सी. ए एंड सी का स्पीड कितना हो गया? ए और सी का ए सेम डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अगेन 6000 मीटर. सो टाइम इज हाउ मच? सो एवरी 300 seconds ए एंड सी विल मीट. 300 seconds के बाद. देन वी हैव बी एंड सी. लास्ट कॉम्बिनेशन. स्पीड कितना है उनका रिलेटिवली? 30 and 20, 10 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस 6000 मीटर. So time is again 6000 divided by 6. So what do we get? We get that AB, AC and BC all meet each other after 600, 300, 600 seconds. Now you have to find when do all three meet together. All three meet together मतलब क्या? देखो, every 600 seconds AB are going to meet. Same 600 seconds BC are going to meet. So if B is going to meet A also and B is going to meet C also, in every 600 seconds, मतलब A and C will also meet each other. तो basically तुम्हें LCM लेना पड़ता है. LCM क्या लेना पड़ता है? 600, 300 individual times का. कितना आएगा? 600 ही आएगा ना. So it will be like that. It will be second meet. A और C की second meet होगी. A और C 300 seconds के बाद एक बार मिल लिए, but B उनके साथ नहीं होता. फिर और second time जब A और C और 300 seconds के साथ मिलेंगे तो 600 पे, तब B भी उनको individually मिलेगा. So after how much time all three meeting? After 600 seconds. So how do you deal this multiple scenario? Take two at a time, find the times, and then take the LCM. And be like, okay, that is a time when all three are meeting. Because in 300 seconds, only A and C meet. B is not there. But at 600 seconds, A, B, and C all are there. Do we get our answer? समझ गया है कैसे किया है ना? Very good. So same opposite direction. Multiple people, opposite direction. ठीक है? Multiple people, opposite direction. कैसे हो रहा है यहाँ पे? देखो, यहाँ पे बोल रहे A, B, and C run on a circular track. Right? With 10, 20, and 30. C is running towards A and B.
दे आर स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट, ठीक है। तो A is running towards C is running towards का मतलब क्या होता है कि A और B अगर इधर जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, C उनके टूवर्ड्स जा रहा है ऐसे, यही हुआ ना, A और B ऐसे जा रहे हैं एंड C उनके तरफ आ रहा है, ठीक है। सो स्पीड कितने कितने 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, and C going this direction in 30 meter per second. So opposite direction is basically A and B are same, but A and C are opposite, B and C are so opposite. So now again what you're going to do is you're going to find two people at a time. You're going to do two people at a time. Let me write this spaciously. A is going here with 10 meter per second. B is also going here with 20 meter per second. And C is basically running here with 30 meter per second. So now again two people at a time. How do you take two people at a time? Let's say you take A and B. A and B are in same direction. Same direction में क्या होता है? Speed subtract होती है. Distance 6000. तो टाइम कितना था 600 सेकेंड्स. नाउ कैलकुलेट ए एंड सी. ए और सी कितने डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन में व्हाट हैपेंस? स्पीड्स ऐड अप. तो स्पीड उनकी 40 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस कितना है उनके बीच में? 6000 मीटर का. तो टाइम कितना है? डिस्टेंस बाय 150 सेकेंड्स. करेक्ट, 150 सेकेंड्स. वैसे फाइंड आउट बी और सी का. बी और सी अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन, 30 एंड 50 मीटर पर सेकेंड है उनका स्पीड टुगेदर. डिस्टेंस उनके बीच में भी 600 मीटर है. तो टाइम इज 120 seconds. So what you're going to do is, we know that A and B are going to meet each other after every 600 seconds, A and C after every 120 seconds, B and C after 150 seconds, and B and C after every 120 seconds. So if that's the thing, I have to find the common point when they'll meet. So again, this is LCM of 120, 150 and 600. 5s are 4s are, right? That answer is 600. So every 600 seconds they'll be meeting. A और C की fourth meet होगी, B और C की fifth meet होगी 600 seconds के बाद, और इन दोनों की फर्स्ट मीट होगी. But that's the time after which they are meeting. Do we get this? Do we get this? Yes. You'll be able to solve now. It is all about relative. क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हमें? स्पीड. स्पीड क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन ऐड, सेम डायरेक्शन सबट्रैक्ट. सिंपल. स्पीड हो गया. डिस्टेंस कैसे होगा? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के बीच पे. सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया तो पूरे ट्रैक का लेंथ लोगे. अगर कुछ डिस्टेंस पे स्टार्ट किया है तो उसके हिसाब से करोगे और फिर टाइम निकालोगे. ऐसा ही दो दो जोड़ी का स्पीड डिस्टेंस टाइम निकाल दिया. टाइम 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 का एलसीएम ले लिया और कुछ दिमाग नहीं लगाना.